So in this video, we are going to solve some numericals on the design constant. So I will write here numerical on design constant. Design constants. So first one, find out the design constant constants of balance section for M15 grade of concrete and Fe415 grade of steel. So for that we have to find out the design constant. So in this first step we have to carry out, that is given data. तो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन दिया है तो उसको हमें यहाँ पे लिखना है. तो सबसे पहले M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है. तो M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इसका मतलब क्या रहता है, सिग्मा CB की वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है. तो IS 456 के पेज नंबर 81 में टेबल नंबर 21 पे सिग्मा CB के परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग, तो वहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से परमिसिबल स्ट्रेसेस के वैल्यू हमें दिए गए हैं. तो M15 के लिए हमें 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर वैल्यू दी है. सिमिलरली फॉर Fe415 के लिए तो ये सिग्मा ST हो जाएगा. तो Fe415 के लिए पेज नंबर 82 में टेबल नंबर 22 में दिया है. तो वहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील रेनफोर्समेंट दिया है. तो इस टेबल में देखिए सीरियल नंबर, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इन स्टील रेनफोर्समेंट और परमिसिबल स्ट्रेसेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसे 3 कॉलम दिए हैं. तो उसमें टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इन स्टील रेनफोर्समेंट में टेंशन दैट इज सिग्मा ST अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm बार्स, और दूसरा है ओवर 20 mm बार्स. तो उसके लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर में देखिए जो लास्ट कॉलम है, हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार कन्फर्मिंग टू IS 1786 ग्रेड Fe415, तो उसमें 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर ऐसा वैल्यू दिया है. अगर आपका बार 20 mm तक है या 20 mm से ज़्यादा भी है तो आपको Fe415 के लिए 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये वैल्यू लेना है. तो वहाँ पे 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये वैल्यू 415 के लिए दिया है. तो दिस इज द गिवन डेटा विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम. So by using sigma CBC we can calculate the modular ratio. So in working stress method there is a new concept evolved, that is modular ratio, and the formula is given that modular ratio small m is equal to 280 divided by 3 sigma CBC. So sigma CBC is nothing but the permissible compressive stress due to bending in concrete. So that value is 5 Newton per mm square. So we can put this value. So 280 divided by 3 into 5. So it will be
18.67. So this is the modular ratio. So after that we have to calculate the design constant. So first design constant is neutral axis coefficient, which is denoted by small k, and the equation for neutral axis coefficient is k is equal to m sigma cbc divided by m sigma cbc plus sigma st. So we have to put these values of modular ratio, permissible stress due to bending in concrete, and permissible stress in steel. So these values are given. So m is equal to 18.67 into sigma cbc is 5 Newton per mm square divided by 18.67 into 5 plus sigma st, that is 230. So after calculating this, we will get the value of k is 0.288. So this is the value of k, means neutral axis coefficient. So after that we have to calculate the second design constant, that is lever arm constant, which is denoted by small j. So the formula for this lever arm constant already we have derived in previous lecture. J is equal to 1 minus k by 3. So already we have calculated the value of neutral axis coefficient, that is k, that is 0.288. So we have to put this value into this equation. So 1 minus 0.288 divided by 3. So after calculating this, we will get the value of j, that is 0.904. After that, third one, moment of resistance factor, which is denoted by capital Q. So the formula for Q is equal to sigma CBC into K into J divided by 2. So this is the formula to calculate the moment of resistance factor. So just we have to put the values of sigma CBC, that is 5 Newton per mm square, into value of K, that is 0.288 into 0.904 divided by 2. So after calculating this, we will get the value of Q 0.65. After that, next design constant, fourth one, that is percentage of steel. Percentage of steel. It is denoted by PT. So we know the percentage of steel, the formula for percentage of steel. So PT is equal to sigma CBC into K divided by 2 into sigma ST into 100. So sigma CBC is equal to 5 into K is 0.288 divided by 2 into sigma ST is 230 into 100. So it will give the percentage of steel, that is PT. After calculating this, we will get 0.313.
percent. So this is the percentage of steel.